Hello friends, in this video we are going to talk about a very good concept, and if you are a student I think you should watch this video to the end and use this framework because it will change your life. And क्या आप आइंस्टीन या जो भी बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन हैं या जिन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा किया हुआ है उनके जैसा बनना चाहते हैं? और उनको बनने के लिए आपने एक चीज़ देखी होगी कि वो बहुत ही मस्त रहते थे अपने काम में, और इस मस्तनेस को हम बोलेंगे फ़्लो। हाउ टू कम इन दिस फ्लो स्टेट। हम इस वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको एक फ़्लो स्टेट में ला सकता है। आपने अगर मिहाली चिक्सिनमिहाई एक स्कॉलर हैं, उनका नाम सुना है, उनकी एक बुक है द फ्लो, और उस बुक से ये वीडियो इंस्पायर्ड है और उनके कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। So stay tuned, we will meet after a short intro. Hey, welcome back. आप सब ने देखा है कि जब कोई साइंटिस्ट है और बड़ा अपने अपने ही काम में मस्त है, कितना फोकस्ड रहता है वो। एक है स्पोर्ट्समैन जो क्रिकेट का कोई बैट्समैन है एंड ही इज़ बैटिंग, और टेस्ट मैच है या वनडे है, T20, विच एवर फॉर्मेट, ही इज़ प्लेइंग एंड फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पीरियड एंड हिटिंग दी शॉट्स। या कोई फुटबॉलर है या कोई आर्टिस्ट है या कोई म्यूजिशियन है जो बहुत ही अपने काम में खोया हुआ है, बहुत ही खो के अपने काम में बहुत ही अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करता है। ये सब एक स्टेट में रहते हैं जो को हम कहते हैं इसको फ़्लो स्टेट बेसिकली। और फ्लो स्टेट्स में हम सब आ सकते हैं, भले ही आप एक फ़र्स्ट क्लास के स्टूडेंट हो, या आप PhD कर रहे हो, या आप एक आर्टिस्ट हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं। आप अगर जैसे ही आप फ्लो स्टेट में आए, आपका जो क्रिएटिव माइंड है वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट गिविंग द रिस्पॉन्सेज एंड द आउटपुट which is beyond thinking and you will love it. आप उसमें पूरे फुली कंसंट्रेटेड हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को, इस स्टेट में आने को हम एक मॉडल है जिसके थ्रू हम आ सकते हैं। हमें बस थोड़ा सा कॉन्शियसली इस पर अपने वर्क करना होगा। आइए देखते हैं इस वीडियो को, इस पूरे मॉडल को, कि किस तरह से एक नॉर्मल इंसान एक नॉर्मल काम में कैसे फ्लो पा सकता है। लेट्स जंप इन। हमने अपने दो चीज़ें ली हैं, दो एक्सिस। एक एक्सिस है एक्स एक्सिस जो हमारी कैपेबिलिटीज़ को डिफाइन कर रहा है। कैपेबिलिटीज़ फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, देन लेट्स से हम मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो कितना हमारे मैथ्स के फंडामेंटल अच्छे हैं। या हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग में हमारे बेसिक सिंटेक्स कैसे हैं, या हमारा जो लॉजिक है वो कैसा है ना, या हमारा जो एक्सपीरियंस है बेसिकली वो कैसा है। ये हमारी कैपेबिलिटीज़ को डिफाइन कर रहा है। वाई एक्सिस पे हमने लिया है टास्क की डिफ़िकल्टी, जो बेसिकली टास्क है वो कितना बड़ा है। लेट्स से आप बेसिक प्रोग्रामिंग लर्न कर रहे हैं, बट आपको एक टास्क दिया गया जो लेट्स से गूगल सर्च इंजन की एल्गोरिथम फिर से लिखना है, आपसे नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। बट अगर आप लेट्स से PhD हैं, बहुत बड़े प्रोग्रामर हैं, बहुत बड़ी MNCs में काम कर चुके हैं, काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है, और आपको बोला जाए कि एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है, लेट्स से आपको बाइनरी सर्च का प्रोग्राम लिखना है, तो आप कहेंगे क्या लिखवा रहे हैं मेरे से। उनको भी मज़ा नहीं आएगा, वो भी फ्लो स्टेट में नहीं आएंगे। फ्लो स्टेट तभी आती है व्हेन योर कैपेबिलिटीज़ मैचेस द टास्क। जब आपकी कैपेबिलिटीज़ इतनी है कि यू कैन डू दैट टास्क बट स्टिल इट इज़ चैलेंजिंग। दैट मीन्स you are picking, this is the sweet spot, your capabilities versus task difficulty.
is matching. If person is having this much of capabilities, and let's say, and he is given of this task or this task of this much of difficulty basically, then that is not very motivating for this person, and that flow state will not come. But if the same person is given the task of this difficulty, then also the flow state will not come here, not here. The flow state will come when the capabilities matches the task. Means a person or the student has the capabilities, but the task still is more than the capabilities. It challenge that person. Then only the flow will come. अब आइंस्टीन को एक कोई छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोली जाती तो देन ही मे नॉट बी इंटरेस्टेड, और एक छोटे बच्चे को आइंस्टीन वाली प्रॉब्लम दी जाए तो वो भी नहीं आएगा मज़ा. बट if your capabilities is at some level and you are given a challenging task, then you will accept it and you will do enthusiastically, and you will follow that your passion, that you want to do it, right? So how to use this model basically now? ठीक है, सबके अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ है, सबके एक अपने अपने टास्क मिले होते हैं, कुछ ना कुछ करना होता है. बट हाउ टू यूज दिस मेथड सो दैट वी कैन कम इन द फ्लो स्टेट. नाउ लेट्स से you are given a task, right, and which you know is very difficult. Let's take an example of you are learning programming and you want to learn DSN algorithm, but that is not your capabilities. You have not done a lot of work on that direction. So what you can do, you can divide the task into the smaller things till the level which matches your capabilities. Right. For example, you have to do a BTech project of and create a full stack application, and you don't know anything about it, but you know the basic programming, let's say, and you know how to code a little bit. Then what you can do, you can divide the whole project into the small things. First of all, identify what are the components in the full stack. For example, there's a front end, back end, database, right, servers. You have to identify these. Now if you take this task, I don't have to build the full stack application as of now, but I will identify these components and create, let's say, a hello world type of program. A hello world for front end, hello world for back end, hello world for server, and hello world for database. Right, and I'm sure you understand what this hello world is in the area or the world of programming, the basic program, the first stage program when you start learning something, right? You can create a basic database, enter some fields, right, and you can create the small page, right, and put your name and all, right, and create some API, the basic API, get, post, right, simple APIs to add two numbers, for example, right? And once you do this, and now this will be challenging for you because you know the basic programming, and you know, okay, you can read this on the web, and you can start doing something on these things, right? As you start learning these basic things, then your capability will increase. Then you increase the difficulty of the task. For example, here initially, like, you have built these different components separately. Now you have to put it integratedly in one program. Let's say, taking the same example, you create a web page where you have the two boxes which user will put the two numbers, and user can select any operator, and you can do that arithmetic operation for those two numbers, and those two numbers has to be saved in the database, and you have to create an API for this. Now, and you have to run through a server, right? So you have learned your hello world programs, and now you are combining all these and creating some useful program. Now you see, you have increased your capabilities, and to an extent that you can achieve this task,
right? You don't have to build, still you don't have to build a full stack application, because it will take a huge amount of energy and time and commitment, and automatically you can't just start building from one end and you can complete it. This is a very iterative process, right? Programming is definitely a very iterative process. You have to do it multiple times, the same thing, in improving the quality, improving one step at a time. So you are using this flow model to increase your concentration and learn the skills which you need, and increase your capabilities as your task difficulty increases, right? This way you can gain the confidence and the concentration, and slowly you can keep improving and taking the difficult task. So I hope you understood this model, and the model is very simple, but it's basically the advantage or the value lies how you implement it, how you use this model in your day-to-day life. So I would say one practical tip: use copy pen and draw this diagram, write your task, whatever the difficulty, and then start dividing the things, and at the right side you write your capabilities, what you know already, and then you make the small goals, and you start keep focusing on those goals one by one at a time, and then slowly over a period of time you will find that you will be more concentrated and focused on particular task, and flow will be achieved, and in that way you will also improve your capabilities overall. So I hope you will use this model, and please let me know in the comment section what is the problem on which you want to flow. You want that a problem can be solved with full focus, right? And write capabilities, write your task, and make that goal, the step 1, step 2, step 3, until you achieved your goal. Will you do it? You should do it. Okay, so let's summarize this flow model. In this flow model we have seen there are two axes: capabilities on the x-axis, and on the y-axis we have the task. And the flow will be achieved only when your capabilities matches with your task difficulty, right? So you take that task which is according to your capabilities, and now you may have to increase either one or two, both. So for example, if you don't have the capability, your task is high, you reduce the task difficulty and increase your capability, right? Both simultaneously, and then keep moving in this way, so that you can achieve whatever the goal is given to you. So with this we will end this video. I hope you will get the value of this video. If you like it, please share with your friends. It may be helpful for them as well. Subscribe to my channel. This will be helpful and motivating for me to create more videos and create more content on such topics which will provide and add value to your life. So thank you. This is BK from Manika signing off.